तभी आया हाँ जंच के अच्छी बात बोल रहा हूँ पहले मैंने सॉन्ग की बर्थडे पार्टी की फर्स्ट पे उससे मैंने उसमें मैंने एक स्लाइस करके खाया होगा उसके बाद मैंने कभी पिज्जा नहीं मैं नाइट में पहली बार दूसरी बार खाया नहीं तब तक मुझे टेस्ट नहीं पता बहुत बेटर लगा एक बार पिज्जा था कभी अरे तो बर्थडे पार्टी की सॉन्ग Swan fancy में अभी अरे Swan में वो वाला Swan है यार ये होते हैं कोई ना वो और मुझे भी ना तो और रिवॉर्ड करना चाहता फीलिंग ऐसा हो गया फीलिंग क्या सिस्टम चाहिए मेरा गाइड है पर तो देखा अबे मुझे लगा ये अगर तो है You think biryani can be veg? No. I agree. No, biryani cannot be veg. It is either pulao or biryani. Which biryani? There's nothing called non-veg biryani. Biryani is always non-veg, right? Yes. Either it is pulao or biryani. Mutton, chicken, biryani. अरे भाई बेंगोली बिरयानी क्या बेंगोली बिरयानी है रसगुल्ला बिरयानी है रसगुल्ला बिरयानी नॉनवेज होता है देखो
अरे कैसे भाई स्टूडेंट में आप मैं भी क्या करता हूँ पीजी आई हैव टू बैक कैसे करता देखो मुझे फिर से आ गया अभी मेरा Yes, yes. कॉम्बो अच्छा है हमारे यहाँ नहीं कॉम्बो और मैं कॉम्बो दे ब्लैक टी शर्ट ब्लैक ये सब कुछ काला काला टाइम के साथ बेटा आ गया You come here. We're talking after this. एकदम से बच के उधर कवर करके खुद को नहीं ऐसे फ्रंट में आ फ्रंट पर ही चलो आ जाओ यू आल्सो आपके यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा कैसे take your notebook your volume writing material keep your things ready what do you want go and read be fast how long it will take चल जल्दी जल्दी आ notebook your volume so notebook भी खोलना है write down today's date name of the topic is metallurgy बेटा फिंगर में खत्म हो गया ना जल्दी खत्म कर मुझे भी चाय का बहुत याद आ रहा था बट मुझे नहीं मिला चाय और प्लीज नेक्स्ट टाइम क्लास में आओगे ना रेडी और परफ्यूम जिस किसी ने भी यूज किया है प्लीज अवॉइड दिस बिकॉज दिस क्लास इज कंप्लीटली पैक्ड एसी का भी कुछ पता नहीं चालू भी है या नहीं है तो एकदम सफोकेशन टाइप हो रहा है ओके नेक्स्ट टाइम ये वाला है इसी लगाया कर नो देन यू
but somebody from this class. Okay, नहीं otherwise problem नहीं होता पर ventilation होता तो और मैं सुबह से travel करूँ तो मुझे और headache हो रहा है उसका. Okay, anyways, we have to start with our topic. Now, as you are ICSE 10th standard student, full textbook you will have for your exam. Your syllabus is very deep, and I don't know how many topics are completed. At present, this topic is allotted to me. Okay, now before starting for the actual process, even in your volume, many things are discussed. Okay, so one by one we will see with all the points, whatever point we are discussing here. I will give example also. Note all the points properly because this thing will help you for writing further reactions in metallurgical process. Okay, अगर discussion में आपको if you are not getting anything, अगर लग रहा है मैम ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो please let me know. Most welcome. Okay, we will sort out that problem and go for the next step. Okay, let us start with the metallurgy. Write on heading today's date. सब फटाफट कर लो. Keep your notebook updated. यहाँ से वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं बताया और आपने सब कुछ लिख लिया. How many topics are remaining? Five. And total how many are there? Small numbers remaining. And those five are just subtopics of the base better topics, the study of compounds. Study of which compound? Carbon compounds? No, ammonia. Ammonia. Nitric acid, and HCl. ये देखो कोई भी चीज कोई भी टॉपिक कुछ भी होने दो हर चीज को इंट्रो लगता है अगर इंट्रो वाला पार्ट अगर इजीली समझ गया उसका कंसेप्ट इफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपर्ली ना देन यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट कि भाई ये नहीं समझा वो नहीं समझा अभी अमोनिया जैसे आपने बोला उसके साथ टॉपिक है कंपाउंड से तो मैंने आपको पहले क्या पूछा कार्बन कंपाउंड नो अमोनिया वाले मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड तो अभी समझ में आ रहा है इट कंटेन नाइट्रोजन कंपाउंड आल्सो इट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड दिस कॉम्बिनेशन अलग अलग है उसका लेट अस सी नॉट टू वरी हो जाएगा व्हेन विल बी योर एग्जाम this you will start taking your mock test December. September. So within this 2-3 months we have to complete till the end of September. I will give you this challenge for Yes, organic is done. organic में see I am masters from organic. Organic होते से बोलते ना left hand वाला काम है मेरे लिए. But this thing, these are the descriptive things where you have to actually do the mugging. वहाँ पे थोड़ा सा if you learn ना if you revise it regularly you will easily do. But students they are facing problem in organic part because they don't remember the formula, पता नहीं what they are doing in writing the reaction. Otherwise, organic it is not at all difficult if you understood the concept. Chalo, anyways, we will see it. Now, this complete topic it is divided into many parts. In that, the first part is metal activity scenes. Okay. Now, starting from the first point of the introduction, the first it is given there are nearly 118 different elements. Okay, 118 different elements. Now, in class 9, you have studied periodic table. Yes. Barabar, you have studied periodic table. That periodic table, it was not given at the once. Before that, many theories were there. Okay, कौन-कौन से theories थे उसके पहले? शॉर्टकट में and use for the whole period. Short limit tell me what was there in each of that theory. Triads, three elements. Triad, three elements. Okay. Triad, And elements. Middle element. Okay. So it was a trial theory where three elements were taken. Okay. The mass of first and atomic mass of first and the third element. It is roughly average of the middle element. बराबर है, right? But because of that, some drawbacks were there. Okay, you might be knowing those drawbacks.
Because of those drawbacks, that theory was not further considered and the new theory was formed. Okay, which was the next theory? Octane theory. Octane means 8. And that particular scientist who made that particular series of the element, he was fond of music. So in music sense, he has made that series of 8 elements. Okay, what was that theory? So if the properties of every first element when they are arranged by atomic mass is repeated in the eighth element. 8 elements. Starting with Right. the So if you arrange that element, if you arrange few element, whatever the property given by the first element, it will be same for the 8 element. और वो वाला जो sequence था, music lover का जो sequence था, that sequence was सारे गामा पदा निसा. Again comes सारे, तो सारे मतलब first वाला and 8 वाला properties were same. Okay, and what was the major drawback of that particular? Because it broke down after 20, element number 20, atomic number 20, it started breaking down because of the transition elements and the inner transition elements. And did not work for the heavier element. तो उसको भी हटा देना पड़ा. Okay, उसको भी नहीं. Then see, here we are talking only about the atomic mass. Number पे आए ही नहीं है अभी तक. हाँ, तो first two theories completely based on atomic mass. Then Mendeleev periodic table. Elements. It was based on mass or number. Again the mass. Okay. Then Moseley's model, Moseley's periodic table, then Bohr's model periodic table. No, Bohr is the full for long formula table. Bohr. it's like that. Neil Bohr for atomic mass. No, the long formula periodic table. was Model for Bohr. periodic table was this model periodic table. We have it. Okay, रहने दो. In ninth standard atom structure of atom we are studying J.J. Thomson model, Rutherford atomic model, then Bohr's atomic model. ये 3 एटॉमिक मॉडल है. तो आप नाम बता रहे हो, ये किसी का प्रीफिक्स है, ये मुझे नहीं पता. अदरवाइज इट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मुस्लिम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एक बार चेक कर लेना है इसको, उसका प्रीफिक्स वाला पार्ट वेदर इट इज बोर और नॉट, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैंने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा. ओके, एनीवेज, तो फिर भी है Mendeleev periodic table. That was based on again atomic mass. Then this particular thing he has described with the help of the table also. बराबर है ना? Atomic table जो उसने दिया था, so in that table columns, rows were there. Do you know how many columns and rows were there? 18 columns and 7 rows. Horizontal, vertical वो भी बता दो, number भी बता दो. Horizontal, vertical वो क्या बोलना है? Commonly horizontal. Groups and periods and vertical. Groups, vertical, groups, horizontal, speed. Okay, but it is also having some drawback. It was again deleted and new periodic table was formed. This new periodic table, it was completely based on atomic number. And how you will define atomic number? The number Number of proton. in the nucleus of an atom. And this number it is equal to The number of electrons number of in the neutral atom. electrons in the neutral atom. And what is the charge of electron? Negative. Negative. Where electrons are present? In the orbit, They are randomly present anywhere in they found in the fixed orbits. is there Found in fixed energy levels or orbits. fixed energy level. And by which alphabet this energy level is represented? Also, SPDF. mean the SPDF, right? SPDF is what? Orbit itself, subshells and orbits. Subshells and everything, it will come under SPDF. अब ये इतना सारा ऐसा करके मैंने खाना खाया, आपको खिलाया, इसके पीछे का एक ही रीजन है, only one reason. We are studying metallurgy, one part.
But here one point is given, 118 elements are present. Where these elements are present? They are present in the periodic table. And how periodic table is formed? It is based on atomic number. बराबर है ना? When we are saying atomic number, there come number of proton, number of electron, where this proton, electrons are present, and what is the valency? Valency is again the important part, because valency will tell you the relation of one element with the other element. When they are placed in particular group, for example, if you are going with a zero group element, they are extreme right of the periodic table, they are chemically inert, but they are showing the same chemical property. All zero group element, they are chemically inert. अंडरस्टूड ना? इसीलिए सब उल्टा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने पूछे. सिंपल वाला ही आइडिया था कि दिस थिंग इट इज कंप्लीटली रिलेटेड. Now here you will ask me, मैम इतना ही करना था तो पीरियोडिक टेबल क्यों बताया? बिकॉज पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, राइट, फॉर एटॉमिक साइज, बराबर, electronegativity, so many points are there. So all these points we are going to make use in our topic metallurgy. Okay, पूरा एक साथ में हमको नहीं आने वाला है. In different step we have to utilize one point. For example, if you are going for the chemical reaction, so what is the sequence of those elements in the periodic table? Whether the chemical properties they are in increasing order, decreasing order, going from top to bottom, bottom to top, that things we have to take. अगर नीचे वाला element it is more electronegative, then we will replace the upper element. इसके लिए मैंने आपसे ये सब इतना पूछा है. ओके, then the next thing it is given, these elements have classified into metal, non-metal, based on the property of this known element. Only 17 are non-metal. Okay, now here comes our metals and non-metal. So what is the difference between metals and non-metal? बुक को मत देखो, जैसे Generally metals. ऐसा सारा सारा इतना सारा chaos मत करो. एक एक ने बोलो, आराम से बोलो, मुझे भी समझने दो. Since from 6 o'clock I am out, I am back to back taking classes. स्कूल में से बहुत सारा काम करके आ गई हूँ. From 12 I came. Okay, आराम से बोलो, हरी मत करो. Don't worry, our syllabus will be completed on time. Because but if you digest this thing properly, na, next part will become easy for you. ओके, इसे आराम से चलो, घाई गड़बड़ मत करो. लेट एवरीबॉडी गेट द चांस टू आंसर. और सबका आवाज मुझे सुना दो. नाम तो मैंने किसी का पूछा नहीं है और मेरा भी नाम मैंने किसी को बताया नहीं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हाँ बताओ. मेटल्स are generally electropositive. वेरी गुड. मेटल्स आर एक आई वांट ओनली वन. दो डिफरेंस है तो इसलिए. अच्छा, यू नो व्हेन वी आर राइटिंग द डिस्टिंग्विश क्वेश्चन, बराबर है ना, distinguished question. For state this question, it is normally for 2 marks. A student has to give 4 points in each of the column. Hereafter I don't know how you are writing paper. अगर distinguished का question आ रहा है, make 2 columns. Here you are writing positive, here write down negative. This is the simplest way to remember. Okay, state के अंदर students are giving 4 points and 5th is an example. But in CBSE मार्क्स ऐसा ऐसे भर भर के मार्क्स दे देते हैं. सो स्टूडेंट्स आर नॉर्मली राइटिंग 2 पॉइंट्स ऑन वन साइड, मतलब टोटल पॉइंट्स आर 4. इसका ऑपोजिट पॉइंट 2. ओके, अब कौन सा मेथड आप फॉलो करते हो आई डोंट नो. बेटर फॉर राइटिंग पेपर यू फॉलो द कॉलम वाला सीक्वेंस. तो करेक्शन के लिए इजी. पैराग्राफ बनाओगे तो इतना पढ़ना पड़ता है, कॉलम रहेगा तो इट बिकम्स इजी. ओके चलो, 2 पॉइंट बताने आपको. मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, non-metals electronegative. Okay. Metals generally undergo oxidation, which is loss of electrons. Loss. Non-metals हाँ उधर भी आते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दो, वो भी पॉइंट हम लोग क्लियर कर देते हैं यार. Metals are generally good conductors of electricity and heat, and non-metals are bad conductors except graphite. Usually. Okay. और कुछ any other point? Metals are high melting point, whereas non-metals have low melting. Metals have High melting point and boiling. high melting point and boiling point. Metals are really ductile and malleable, but Ductile non-metals are and malleable. Sonorous. Metals. Sonorous.
Lustrous on the Metals are usually solid except for mercury, example, and non-metals are usually found in the gaseous or liquid state. gaseous. or solid state, any Solid state except. Metals from cations and non-metals from anions except hydrogen. And cation, charge on cation, positive. charge and Oh, so electropositive cation, बराबर है ना, electronegative anion. हो गया, कुछ बचा है? Anything remaining? Example, वो तो you are aware of all those examples. Okay, यहाँ से The metals are generally reducing agents. okay, metals are reducing agent. मुझे remind करा देना है, this point we have to discuss. Reducing agent, oxidation and electropositive, electronegative. यहाँ से start करते हैं. So as you said, metals are metals are electropositive. So metal atom, okay, तो directly electropositive बन जाएंगे. What tendency to lose electrons. Tendency to lose electrons. So when they are losing, suppose for example, they are losing one electron in case of sodium. Okay, sodium will be converted into, after losing one electron, sodium ion. Sodium ion, it is known as, and what will be charge on sodium ion? +1. Plus indicate One electron is given away. plus indicate loss of electron. Okay. On the other hand, become example of common salt we are taking NaCl. Okay. Na तो हो गया. Cl, which is non-metal. Atomic number basic से start करो. Atomic number 17. Electronic configuration 87. Large shell contains 7 electron. Need of 1 electron. So it will take 1 electron from sodium and Cl will be converted into Cl negative. This complete reaction of taking electron, it is known as Reduction oxidation. reduction है या oxidation है? Taking is oxidation. Reduction Reduction is gain of electrons. Redox reaction. नहीं, total नहीं पूछ रही हूँ. Only reduction. Taking of electron. Taking of electron is reduction. Loss of electron, reduction, gain of electron, and when you consider both the reaction together, it is redox reaction, REDOX. OX for oxidation, RED for reduction. वो वर्ड का मतलब समझ में आया? RED for reduction, gain of electron, OX, loss of electron. Both the terms are combined together और one नाम दिया है उसको as a redox reaction. Some of this. Okay. Now redox reaction आपको topic था क्या कभी? Ninth में था. There different methods are there in order to calculate, in order to write down the balance reaction. Which that thing was there by oxidation number method or by ion electron method. Calculation of oxidation number कभी calculate नहीं किए. Anyways, आपको मैं एक simple वाला example बता देती हूँ. In 11th standard it is there. For structure of I think it is in 8 or 9 first state. इससे मैंने आपसे पूछा था आप लोगों को. Okay. Now sodium Na, it will give 1 electron. So 1 E negative. Okay. +1, it is a oxidation number of sodium. +1, it is a oxidation number. Similarly, Cl. valency. क्या? Valency. अभी आप इसको valency बोल रहे हो, but it is a oxidation number. In terms of Oxidation redox state. reaction. Oxidation state. Oxidation state, oxidation number. In terms of redox reaction, I am saying. Okay. Then valency तो वैसे भी sodium का it is +1.
Then Cn, it can take one electron here. It is converted into Cl negative. So -1 is the oxidation number for C. ये calculation है. You have this calculation in redox reaction topic either for ion electron method or for this one. Oxidation number method. आपको एक formula देंगे. In that formula, they will underline any of the atom and ask you to calculate the oxidation number. We have it as valency to oxidation. Valency वाला part है ना आपको तो थोड़ा फॉर्म को चेंज करके उन्होंने आपको दे दिया है. Okay. It may be in this way. CO3 2 negative. ऐसा वाला रहेगा ना आपको. Oxidation number it is given. Find out oxidation number of carbon, oxygen ऐसे कुछ है? No. Okay, चलो. Anyway, चलो next part देखते. Now, उसके बाद में next thing, oxidation and reduction. These two things are clear to you? No problem. Now, next thing is oxidizing agent and reducing agent. This thing we have to discuss. This is very important because most of the students they are confused in that part only. Oxidizing agent and reducing agent. That is it. Oxidizing agent is something which causes the oxidation in another substance while getting reduced itself. As a reducing agent is a substance that causes the reduction while getting oxidized. First thing. A second was acclimate nitrous for the health and the area of the place. But there is a man and the Buddha. Noticing you here, as he is starting in the letter, around secret. मुझे भी समझ में तो let me take my थोड़ा सा frequency high हो जाता है. Okay. Oxidizing agent and reducing agent. बेटा बताओ. Oxidizing agent oxidizes other and itself it is reduced. Reducing agent of reduced others and itself will reduce. Last bench. कुछ बोलेगा नहीं. क्यों? मुंह में दही बनाया है. थोड़ा मुंह खोल. थोड़ा आंसर दे दे. Okay. Oxidizing and reducing properties. There are reverse, then oxidation and reduction. The substance which is undergoing oxidation, it is reducing agent. Am I right? Substance which is undergoing oxidation, it is reducing agent. For example, here Na, it is undergoing oxidation. जाओ जरा फेंक के आ जाओ बाहर से, क्योंकि कुछ आपके मुंह में फेंक के आ जाओ. तो Na, it is undergoing oxidation, but it will play the role of reducing agent. Reducing agent क्या करने वाला है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला है. सॉरी, रिड्यूस करने वाला है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने वाला है. बराबर है ना? On the other hand, the substance which is acting as a which is undergoing reduction, it will act as an oxidizing agent. वो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. सोडियम it is undergoing oxidation, right? This reaction, it is oxidation reaction. This is oxidation reaction, but sodium itself will act as a reducing agent. On the other hand, Cl it undergo reduction reaction, but itself it will act as an oxidizing agent. See the difference. See the difference. आपको ये इसलिए देखना है क्योंकि metallurgy में you have to show oxidizing agent mention there and write down agent also and with reaction. This thing is clear. Oxidation. Last bench. Meaning of oxidation. Definition for oxidation. Addition of
Loss of electron. Decide करो. You gave me 3 options. Which is the correct answer? I have to select here. Oxidation means उसको इधर उधर किधर मत देखो. यहाँ पे सब कुछ है बोर्ड पे. Oxidation. Second bench. Oxidation. Loss of electron. Reducing agent. देखो हम पे reducing agent. Also useful. Second last bench. Oxidizing agent means itself it undergo. Oxidizing agent itself it undergoes oxidation or reduction. Oxidizing agent itself it undergo oxidation or reduction. Reduction. बराबर है. Oxidizing agent itself it undergo reduction. Right? मैंने लिखा है आपने डाटा इंग्लिश नहीं किया. देखो विदाउट रहेगा तो अभी पूछ और समझ भी ले लो. नहीं समझा रहेगा तो समझ लो. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन रहता है? रिड्यूसिंग एजेंट. उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं ना, तो वो सामने वाले से जो भी कोई है उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेने हैं. उसको उल्टा काम होगा. यहाँ पे नाम से उलट काम होता है. दलालगिरी का काम कर रहे हो. हाँ, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन. सो itself it will act as a reducing agent. Okay, that particular atom, ion, molecule, जो भी कुछ है itself it will act as a reducing agent. So again, for example, I don't know what is how they are asking you an exam. They may give you one reaction from your metallurgy also. They can give you one reaction and they will ask you to identify the oxidizing agent and reducing agent depending on your content होगी. तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन रहेगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन होगा वो कौन रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Any doubt? Sure? पक्का ना? Shall we go to the next point? I'm taking integrated classes also. So they are coming twice in a month only for practicals, first and classes. One boy we have, वो पहले सुने, पहले पूरा सुन ले. Then we will start doing that. ऐसा 5 minutes he will do like this. तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या किया ये सब? मैम आई एम विजुअलाइजिंग. मैंने ये कैसा विजुअलाइजिंग हो गया? Then he will stand for some time and afterwards he will start asking question. आज तूने मुझे उसकी याद नहीं आती, मतलब तुम बैठे हो, ओके. अगर डाउट में नहीं समझा तो पूछो. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. अगर समझा तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. क्योंकि अगर कुछ रह जाएगा ना बाकी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भाई दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर. एनीवेज इफ यू आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज विद साइंस सब्जेक्ट, सो दिस टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन इट इज देयर फॉर क्लास 11. अभी ICSE और CBSE के लिए अलग अलग बोर्ड्स पे नहीं है. तो we have only one CBSE और state and I don't think from ICSE you will go to the state. सभी CBSE में ही जाओगे तो redox reaction topic है. There this topic carries 8 marks. For this one only few things are there: oxidation, reduction, oxidation number, balancing the reaction, stop notation, and at the end electrochemical potential. इतनी ही चीजें बहुत easy है. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इसमें क्या हो गए? ये बुलेट में के सारे पॉइंट्स हो गए कवर हमारे. ओके नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी जो आपने बताई थी, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, वी नीड टू डिस्कस दोस आल्सो ना. सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? मैलिबिलिटी, Ductility can be written into sheet or ductility can be drawn into wires. Drawn into the wire. Hence we can see copper wire हमको मिलता है. And आपने you told about this conductivity. So metals they are good conductor of heat and electricity. So the points which are under metal category: electropositive, then electropositive and बताओगे मुझे please.
Oxidation, they undergo oxidation, they are reducing agents, they are good conductor of heat and electricity, then they have property of malleability, ductility, and high boiling melting point and boiling point. Right now, ये जो वायर है नॉर्मल वाला केबल वायर के अंदर जो इंसर्ट किया है वो बहुत गर्म होता है. If you keep your laptop or anything for the charger, na, that adapter will make you realize that it is heated, but that particular thing it is not melting. But if that plastic, देखो typically में अच्छा चलो छोड़. Then coming to the next column, metal column we have done all what मत ये सच में चिपकली से हुआ. हाथ पे आएगी. Very finally. I am not aware ना that चिपकली चिपमेल फीमेल क्या है वो तो चुप गई बोलना पड़ेगा ना. चिप गई चिप गया तो भी कुछ गया ना. फाइनली गया ना किसी किसी हियर ए बात ना किसे इसको शॉक लगेगा तो भी. हाँ ओके. non-metal coming over to non-metals. undergo reduction. उल्टा वाला पॉइंट सारे रिवर्स वाला सेकंड कॉलम वी आर डीलिंग नाउ राइट ना. यहाँ पे चलो फर्स्ट पॉइंट Undergo reduction. पॉजिटिव का पॉइंट देन Undergo सीक्वेंस फॉलो करो मेथड को रिमेंबर. Undergo reduction oxidation. oxidizing agent then bad conductor. Okay, low melting and boiling point and Brittle, not hard. And Okay. brittle and hard, not ductile, solidus or anything. okay. So ये सारे points we will add. अच्छा, now tell me one thing. You have learned periodic table in 9th standard. So arrangement, you are aware of that arrangement and everything. Where does this metal, non-metal exactly place in the periodic table? Non-metal from the right side. ऐसा मतलब जो top देखते हैं. Then extreme right, left, middle, metal. Okay, okay, understood. मिल गया मुझे आंसर. चलो. With all chaos I understood. Metal, non-metal and metallite. One thing and right of the periodic table यही बोलना था ना आपको. Top right. Top right or top right. Towards the top, because as they go down a group, electronic metallic character increases. So towards One particular sequence they are following. towards the right, more towards the top. आपको पता है वो sequence metal, non-metals they are separated by metalloid and they are in particular sequence. Zigzag pattern. Staircase pattern. Zigzag pattern and periodic table it is again divided into different blocks. SPD. S, P, D and F. अभी आपने मुझे इतना पूरा आंसर दे दिया. मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बोला था ना. P block. Instead of saying extreme right ऐसा वाला Or in the P पता नहीं block. कैसा कैसा. So they all are P block element. And P block from which number it start? P block starts in 13. 32 13th group to till 13 to 18. 18. 18. It's not 7, just 17. 13 to 18. Right now, 13 to 18. P block on this side, left side. Which block is there? Yes, D block is in between S block and P block. S block is the first two groups. First two The group. middle 10 are the D block and D the block. different transition elements are the F block. Bottom of the periodic table, 40 series of 14 elements. Bottom of the periodic table, right hand side from 13 to 18 are P block element. In that P block, metal, non-metal, in between metalloids are there and metalloids are in the zigzag
manner. They are showing properties of both metals as well as non-metal. एक ऐसा वो line of separation है metallurgy. Okay, याद रहेगा ना? Then और कुछ बचा है इसमें? देखो वहाँ पे. Any bullet point is remaining or not? Done na? So first was metal, non-metal, and then is a activity series of metal. अभी यहाँ पे in activity series ना for metal, metals are in 13, 14 वो वाले group में है. तो इसके अंदर they have given one particular sequence. एक एलिमेंट बीच में रखा हुआ है और बोला है जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है उसके नीचे वाले जो है वो ऊपर वाले को रिप्लेस करेंगे. वो सीक्वेंस में आपको दे दूंगी. बट बिफोर गोइंग फॉर दैट सीक्वेंस लेट मी नो व्हाट इज this one. How does atomic size, atomic number varies in group and period of the periodic table? अच्छे से बताना. And one more thing, notice करो. हाँ मैं आपको before you start your answer ना पहले याद रखो. You may follow top to bottom sequence. You may follow bottom to top sequence. You may go from right to left or left to right. But एक चीज याद रखना, whatever sequence you have started in order to explain atomic size or the atomic number, same should be followed for both the things. आप एक बार बोलोगे top to bottom, दूसरे explanation में दोगे bottom to top. Don't confuse the exam. Otherwise, make one small table सब चिक-चिकी खत्म हो जाए. For writing answer I am saying because many times it happens student they have something in the mind, they are putting something in the paper. So one time they are following one sequence, second time they are following other sequence, and in that there are high chances of losing marks. Okay, whatever thing you are discussing either group, either period, mention it properly. उधर भी confusion नहीं चाहिए. As an examiner, this is our observation. Okay, चलो let's start. Which will be the first atomic size लेना है या number लेना है? Size. Okay. बोलो size. एक point बताना. Atomic size increases down the group. Down. From top to down. Okay. Here. Atomic size decreases from left to right, exception is 0. Okay. यहाँ पे. Atomic size remains same in one column. That is. Same here. मैंने अभी तक confusion नहीं किया है. Please speak. Atomic size remains same across the page. सिर्फ याद रखना आपने क्या बोला. मेरा पॉइंट बता दो. नहीं. मैंने 2 पॉइंट पूछे थे ना, atomic number and size. 2 things I asked ना. I think you all are discussing atomic size only. We have not started with atomic number, right? No? Now go to number. Atomic number increases Increases down the way. Okay, so when we go from top to bottom, it increases. Atomic number increases from left to right. Left to right. Anything is remaining? हो गया? सबने बोल दिया? कुछ नहीं बचा है? इसमें क्या होगा? Atomic size increases from left to right now. Decrease. Atomic size. Atomic number increases from left उसे to right. नंबर का बोले साइज का ही. चलो लेट्स स्टार्ट. आपने अपने अपने पॉइंट बता दिए जो कुछ पीरियोडिक टेबल के पॉइंट्स है वो बता दिए. So while going from top to bottom, atomic number increases. बराबर, atomic number increases. What about size? It will also increase Why it increase? because करते हो, मैं आपको कोड देगा प्लीज. मत दे दो, वो चिपकली फिर से डर के बाहर आ जाएगी. आई नहीं ना. हाँ, एक बात बताओ, चिपकली ऐसा प्राणी है जिसको ठंड बहुत पसंद. हाँ, नहीं वो ठंडी जगह प्रेफर करती है. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द lizards दे आर प्रेजेंट इन एसी वाला रूम में. फैन वाला बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते इसलिए
अगर बाहर आएगा heat- No, but the point of heat is more. Okay, ये हमने खुद experience हमारे घर पे किया that day when we place AC in our house next day से छोटी छोटी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई जाती है ये AC बंद करना पड़ा. Okay, anyways, it's not our topic. Biology is not our topic. From top to bottom, atomic number increases and there is an increase in the atomic size. Now my question is why the atomic size increases? It is high answers. Okay, so why? Because of the addition of extra shells which outweighs the nuclear pull exerted by the nucleus on the electrons. So the atomic radius increases, which means the atomic size increases. यहाँ पे No. which is same answer. This side same answer. So आपको ऐसे बोलना है with increase in the atomic number, new and new shells are added. मेरा आपने जो बताया वो मैं बता रही हूँ देखो अगर right here होंगे मुझे बता दो. With increase in the atomic number, we have to place those electrons also. So what we are doing, we are increasing the number of the shell. Okay, when we are increasing the number of the shell, it will be like a magician कोई आया है जादू दिखाने के लिए वहाँ पे सेंटर में खड़ा है बड़ा सा क्राउड है वहाँ पे तो लास्ट वाला जो है for last one, is it possible to see what that magician is doing? No. No. Same like that with this big size of क्या हो गया? ये class, it is my authority. I have. Okay. कोई joke करना है तो let it go from my side first. और ऐसे ही कोई joke है तो सबको बता दो हम सब हंसेंगे. अभी भी यहाँ पे ऐसे चेहरे तो गिरे हुए पड़े हुए जिनकी आवाज में अभी तक नहीं थी. ओके अच्छा लगता है आप लोग हंसोगे बात करोगे लेकिन जब ये ऐसी बात होती है ना तो दैट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स दैट अंडरस्टैंडिंग सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस we are increasing more and more shell this shell they will take more and more electron and automatically what happens the attraction between the electron in the outermost and the nucleus it will not be much more उसका साइज बढ़ जाए हाँ और उसमें और एक प्रॉपर्टी है आई थिंक इट इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ शील्डिंग इफेक्ट वो शायद आपको नहीं है रिलेटेड ये वाला हो गया ना एटॉमिक नंबर एंड साइज वी हैव डन फॉर द कॉलम व्हाट अबाउट दिस वन पीरियड वाला पार्ट में from left to right its atomic number it goes on increasing right but size Decreases. No, it decreases until debate नहीं करना it increases it decreases it remains the same whatever is your answer please justify your answer justify your answer whatever answer you are giving now I need only justification कि भाई ये increase हो रहा है ये decrease हो रहा है ये same रह रहा है ये बढ़ के फिर कम हो रहा है खाली मुझे justification दे दो मैं बाद में आपको conclusion बता दूँ 4 hands are there we want 4 different answer हाँ same answer के साथ में कोई नहीं आगे जाएगा हाँ अब बताओ your hand ऐसा लग रहा है सिर्फ touch करेगा ये बच्चा हम बोले चलिए the number of shells stays constant so there is no increase in size because of that factor. The number of electrons and protons increases due to increase in atomic number. So the attraction on the shells, outer shells is greater because of the greater number of protons and electrons, which decreases the size. Yeah. सब बोल दिया कुछ नहीं छोड़ा एक टर्म ही है बस otherwise नहीं कोई अदरवाइज नहीं एक ही वर्ड है थ्री ऑप्शंस मिला है इंक्रीजेस वाला डिक्रीजेस वाला it remains the same और एक ऐसा भी आंसर है for some time it is same and then it is changing तो उस पे कुछ जस्टिफिकेशन कैन यू गिव कि वो उनको ही जस्टिफिकेशन मांगू मैं so you are with the same answer here this side same answer और फिर वो कहाँ चले गए जो मुझे ऐसे सब बोला था बढ़ता है कम होता है थोड़े समय के लिए बढ़ता है फिर कम हो जाता है नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट आंसर हाँ
कितने सारे ऑप्शंस दिए थे, सारे छू हो गए। आपने भी सुना था ना, इन्होंने आंसर दिया था इट रिमेन्स सेम, इट चेंजेस। तो कहा गए जस्टिफिकेशन मांगा तो कोई नहीं दे रहा, हाउ इज इट? तो दिस थ्योरी विल आल्सो फेल देन। ऐसे ही तो सारी थ्योरी फेल हो गई पीरियोडिक टेबल बनाते बनाते। ओके, फिर इसने आंसर दिया, एक्चुअली इट इज अ करेक्ट आंसर। From left to right, we are increasing the atomic number, but we are not increasing the number of shell. Whatever electrons, new electrons are there, we are placing in the same shell. Same वाले में ही हम लोग place करें. So there is no option, no chance to increase the size. तो क्या होता है, when we are moving from left to right, the atomic number it keeps on increasing. Number of electrons are increasing. New electrons are added in the same shell. ओके, साइज क्या होने वाला है, अभी उनका जो छोटा होता है वो क्यों छोटा हो रहा है, हम लोग ऐसा उसका, वी आर नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल, जैसे जैसे शेल बड़ा होगा साइज बढ़ जाएगा, नहीं उसी शेल में हम लोग डाल रहे हैं within the same shell. So what happened, we are increasing only the number of electron in the same shell, and the attraction between the valence shell and the nucleus, it goes on increasing. Okay, it goes on increasing, and this is the reason why that size of the atom it gets, size goes on decreasing. यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा size is increasing, it will increase and it will remain constant. वो थोड़ा बढ़ता है फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है. No, size it goes on decreasing. From which side? Left to right. Left to right. What about top to bottom? Increase. Increases. Why increases? The addition of successive. Yes. Okay. And when we are adding new shells, these electrons are added there. And what happened for the attraction part? It goes on decrease. तो उसका साइज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. ओके, अभी बेस्ड ऑन दिस वन पर्टिकुलर सीरीज इज गिवन, यू नोट इट डाउन, इट इज गिवन इन योर वॉल्यूम आल्सो. आपको रिप्लेस करने के लिए लगेगा पेज नंबर 146 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 146. ऊपर से देखो, K greater than Na. हमने किया था पहले क्लास में. नहीं करो इसलिए, जब हम नीचे से पास करते हैं ये चीजें बहुत समय तक याद रहती है. You are not writing, copy it in your notebook. In their series, now write down this point. Looking in this series, which is the most reactive? But the chemical, what is meaning of this in our terms? It loses electrons most easily. Loses electron, Most easily. electropositive, बराबर, Positive. more reactive, खुला छोड़ दो तो किसी के साथ नहीं रिएक्ट हो जाएगा, उसके विसिनिटी में उसके भाई बंधु कोई मिलेंगे तो बराबर है ना. वेयर इज गोल्ड, लास्ट वाला Gold platinum same है. सीक्वेंस में है ना, सिल्वर प्लैटिनम एंड गोल्ड, इट इज इन द सीक्वेंस, लास्ट में गोल्ड. Gold and platinum are interchangeable. उसके लिए भी रीजन है. ओके, तो ये दिस थिंग, the last three elements, they are not much reactive, that's why we are very important things. So they don't tarnish easily. हाँ, तो वो ज्यादा Silver tarnishes because it is more reactive. सिल्वर देखो वो सीक्वेंस में आंसर भी है ना, AgTTA, A2 is a gold,
तो वो कहाँ होता है। अच्छा, और ऐसे भी अगर हमने ऑर्नामेंट बहुत सालों तक पहने हैं तो उसमें से डर्ट ही आती है, क्लीन इट प्रॉपर्ली, वॉश इट प्रॉपर्ली, इट विल अगेन शाइन। Other metals corrode through and through, they don't corrode only on the surface. उसमें तो करोजन का रेडॉक्स रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं होता है ना। सी दिस एरिंग्स आई एम वेयरिंग फ्रॉम माय साइड, हर उसका कलर चेंज मतलब ड्यू टू डर्ट इट माइट बी थोड़ा सा चेंज, कलर चेंज होता रहेगा, अदरवाइज इफ आई क्लीन इट प्रॉपर्ली ना इट विल अगेन स्टार्ट शाइन। यही है करोजन वाला प्रोसेस इसमें नहीं होता। दे आर in that sense we can say they are inert होती, इतना कहाँ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। प्लेटिनम में भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी है, गोल्ड विद प्लेटिनम, so that parts are different, इसको पूरा मिक्स करके नहीं बनाया रहता है, बराबर है व्हाइट गोल्ड। चलो come back to our series, reactivity series. Now in this series the most reactive is potassium, least one is gold। हाइड्रोजन इज अगेन प्रेजेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन डाला हुआ है, एंड नोट डाउन दिस सेंटेंस, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, एंड प्लेस एट द टॉप ऑफ द लिस्ट योर ईयर फॉर इंग्लिश क्लास ऑल्सो। इंग्लिश वाला क्लास के लिए आप लोग नहीं है potassium and is placed at the top of the list. Top of the list. Abhi some students have written vertically, some have written horizontally. So if you are taking it vertically, it is at the top of the list. If you are considering it horizontally, then at the extreme left, potassium is present. Left, right में gold, okay, and try to remember this series. Replacement वाले reactions है आपको। Top of the list and the list active metal is gold, which is placed at the bottom of the list. Then write down hydrogen is also included in this series because it can Becomes a positive ion. positive ion. Put full stop. It would occupy the position based on its formation of positive ion. Now here again we have to take one full stop. Hydrogen form positive ion. किस बारे में बताया है? क्या बोलना है? Even though it is a non-metal, it is included in the metal reactivity. Why? Because it found a positive, because it only has one electron, the maximum electrons. Hydrogen is there because of the reactants. It uses electron. बेटा आपको कुछ नहीं बोलना है, वो तो कल मैं घर का करी बना लूँ तो उसको लेके जाती हूँ और छत पे साथ में सारा घर निकाल लेती हूँ। हाँ बोलो। Hydrogen has only one electron in its outermost shell, and by losing that one electron, it becomes a positive. Positive. Extension रहेगा मैम इसका। अच्छा। If it wants to become electropositive ion, then it can lose its one electron, and if it wants to complete its outermost shell, it can gain an electron. Because it has only because it can gain the electron. हम दूसरा है ये कैसे देखो मैंने आपको जब भी मैंने एटॉमिक साइज और रेडियस वाला पॉइंट पूछा था, एटॉमिक नंबर वाला, तो मैंने ये पॉइंट पहले क्लियर किया था, आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, बिकॉज कॉइन हैज टू साइड्स। आप कौन से साइड से देख रहे हो, दोनों साइड से वो एक रुपया ही है, लेकिन फ्रॉम विच डायरेक्शन
You are having that coin in your hand. That is also important and it also matters. For example, तुमने एक साइड से कॉइन पकड़ा है और आंसर दे रहे हो, मैं किसी और साइड से थिंक कर, then in that case from my point of view your answer it will be wrong. इसलिए ये केमिस्ट्री ऐसा है, पूरा विजुअलाइजेशन वही है, तो जोक ना करके समझो, जहाँ पे नहीं ऐसे ज्यादा ये मत लेना, ज्यादा हेवी मत लेना, लाइटली मैं बता रही हूँ। हाँ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते थे। Next Next class after 5 minutes. No, ma'am. Next week technically Tina, my head is spinning now. I'm 10 minutes of break. No, 5 minutes. That's I'm 10 minutes का है. Sure. Yes, ma'am. So this was 6:30 to 7:30. It's a class. आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर ये ठीक हो जाएगा। Ma'am, there's news work is a long form of the period. It's a long form of the period. One thing- मेरा इशू was started, मैंने इसे पहले बोला है, ये बोर है ना, लाइन में हम आगे से है, हमें मॉडल में दे रहे हैं, ये बोर को लिखो, ये वाला ये चीज let you confirm it first and then for our CBSE we don't have this much I probably extended because you know, secret made many choices. But when you said modern field, this is the Probably he added this. आपने हिंदुस्तान में लेकर जगह के लिए रखी है ना, एक दूसरे को कहाँ पर है, ये यहाँ पर ये तो कम से थोड़ा आप लोग फ्रेश नहीं हो गया, अंदर ही बैठोगे 15 मिनट को नहीं, no this concept होता है कभी कभार यार. होता है कभी कभार थोड़ा सा होता है अनलिंक अगर होता है that question I was really must answer yeah. How does it gain electron by losing an electron? Yes, answer. क्यों मुझे बोला ना मेरे को खाना है मुझे क्या हमको खाना है पेपर फट गया ये क्या है गाइस कैसा ये इसको नहीं पढ़ा समझते हैं और मेरी छुट्टी में तभी बात करती ठीक है ये मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ क्योंकि मैं इधर को लेके आई हूँ तब भाई भी है पेपर का है पेपर है कि वो पता नहीं कैसा एक आदमी ये शॉर्मा जैसा है शॉर्मा ओके आगे ये में गिर रहा है यहाँ से कौन बैठा है एक मुझे नहीं देगा तो
रक्षा हैप्पी बर्थडे बर्थडे मैंने तो कॉपी को दी थी मैं दी थी तो भी क्या आयुष था क्या? हमारा बाद में 7:30 से चालू हो रहा है आज पिटता है यार सबसे मत बात कर आधे घंटे का ये पैसा काम उसी का है आएगा सच्ची वो क्या है ये नई टीचर कैसे लगी एंटी अरे सच्ची मुझे लगा केमिस्ट्री में ऐसे नहीं ला सकती है यहाँ पे कौन सा लेक्चर है केमिस्ट्री तभी कई बार चुप रही है केमिस्ट्री एक शुरुआत में बोल के रहा था इसलिए पूरा मूवमेंट दही हो जाता है क्यों ए ऐसा चला जो खा किया उसने दही की दही की सब्जी बनाते हैं नहीं करी कैसे बनती है नहीं करी करी में दही थी वो निकाल के अरे यार क्या बनता है गाली भेज देगा ओ हाँ लिख रहा हूँ मैं अच्छा मैं डिसएडवांटेज इसकी जगह मैं कोई मकसद के जोक भी कुछ नहीं कर सकता मकसद अल्लाह वो आइटम का और कितना कम है मेरा भाई चीज पेट यार ना तो अरे बैक टू बैक बेनिफिट होती है मुझे संगीता नाम की वाइब्स आ रही है इस टीचर को देख के नहीं अब नहीं क्या ही चार्ज काम बट करते और कौन सब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट है क्या ए वायरस आ गया वायरस आ गया अपने पापा टेंपर है सजेशन पेपर नहीं भाई शुरू नहीं हो गया और जा रहा है मतलब 7:30 से चालू है ये लग रहा है नाम का सॉल्व इसका सर है वो आपने क्या मैंने चेक नहीं की मैंने मैं मैम को ऐसा चाहिए यार कर लेने दिया था अबे वो रखता है अरे भाई अपने नाम को ऐसे ट्रीट करना चाहिए तू कर ले केमिस्ट्री टीचर पता है कभी नहीं पढ़ा मुझे तो ये लाओ रानी क्या दिखा पहले दिन थोड़ी डिस्कशन एक्सपीरियंस
सच्ची में गुस्सा था नहीं है यार, ये तो वीडियो सबका वीडियो बना रहे थे, ठीक है, मेरा भी सबका बना है। तो सबसे अच्छा ना सलेब का वो एक चर्चा आ रहा था ना लाइव, किसका हिल रहा था सर ने किसको, तो बिल्डिंग है ना सर वहाँ पे बैठते हैं। हाँ वो भी नहीं सर यार ये वो उसके बंद ही है वो भी कर सकते हैं। एक सेकंड मेरे को अंदर कर क्या प्राइस किया Actually, it is very strong as a from class में स्मेल है से पहले से क्योंकि नाइन का स्मेल आ रहा है। So this man was not there in that class. नहीं finance नहीं क्योंकि पहले जब आते थे तब भी रहता था स्मेल और फिर यूज्ड हो गए स्मेल से फिर अच्छा Okay, so we were at the point, hydrogen becomes H positive. So how does it become H positive? And then it's very simple, by giving one electron, एक ही है बेचारे के पास में, वो भी दे देता है. The next question I asked was, क्या था बेटा वो क्वेश्चन? how does देखो फिर से जोक करने पड़ेगी. positive ion Positive ion. नहीं. how does it gain electrons How does it gain? And what that complete process it is known as. I am asking you because this thing is there for 9 standard ICSE में उनको सब पढ़ा के यहाँ पर लगी. duplet यही reference दिया. complete duplet It gives electrons. KNC's reduction is oxidation It's for electron of an element completes it out. duplet Duplet. And that particular bond it is known as covalent covalent bond. और आप oxidation reduction पे क्यों आए? आपने बोला कि what is that process में रखो what is it? अच्छा बराबर है. मैंने बोला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. देखो कंफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको बता दूं. We are studying oxidation and reduction, right? दस ओके गेन तू बाहर निकल क्वेश्चन से. ऐसे सामने मैदान में ही रहे. सामने आने. और नेक्स्ट क्लास है ना, whenever it's my next class, occupy this front bench. You do not sit at the end. If you are sitting at the end, मैंने देख लिया तो उसे तो definitely I will take with. Next day का मेरा lunch का बंदोबस्त हो जाएगा. दही बनाता है ना मुंह के अंदर. आपको नहीं समझेगा वो जो थोड़ा बोल दिया थोड़ा. ये देखो see we all are learning here chemistry. One thing we all should be aware when you are keeping your mouth closed for the longer time na percentage or the level of CO2 in our body it goes on increasing. तो हम ना tired हो जाते हैं उससे. थोड़ा मुंह खोलो थोड़ा हंसो थोड़ा बात करो वो CO2 को बाहर निकलने. समझ में आया? ऐसे मुझे हर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है बस प्रैक्टिस. ओके यहाँ पर यस. और तुम लोग को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है. दही वाला नहीं वो ऐसे जब कोई ज्यादा समय तक ऐसे मुंह बंद करके रखता है ना तो हम बोलते हैं मैंने दही बना लिया है मुंह ये खोलता है. समझ में आया? तो तुम लोग बाद में मेरे जाने का उसका जोक नहीं होना था. ओके ना? ओके देन आई विल आल्सो से ओके during PTM. ओके ना? ओके चलो दही दिवस हो गया. अभी आज कम बैक टू दिस वन hydrogen H positive. So hydrogen it can give one electron and it will become H positive. Now the example where hydrogen become H positive is a formation of ammonium ion. Ammonium ion. Formula of ammonia is Na. And ammonium ion is positive. Understood? And that bond is coordinate bond. Coordinate.
वहां पे क्या हो गया हाइड्रोजन it is giving electron, it is becoming H positive and it is in the form of coordinate bond. That complete molecule is a form in the form of coordinate bond. One thing. इस दूसरा हमारा पॉइंट ये आया था कि how hydrogen takes electron, what is that process? It is known as, now when hydrogen is taking an electron, it is not by this thing. Hydrogen will take the electron in order to have stability, in order to get convert from atomic state to the molecular state. Hydrogen atom to hydrogen molecule or any other molecule. For example, hydrogen can combine with Cl to form HCl. अभी आपको atomic number ये और वो सब बताने की जरूरत नहीं है ना, कि वो भी बताना पड़ेगा. Which bond is present in HCl molecule? Covalent bond. Okay. Similarly, hydrogen can form bond with many of this one. And if you go for the organic chemistry, you will see it is a combination of C and H. Simple example which you might have studied in class 10, sorry, class 9 is formation of methyl molecule. याद आ रहा है? Visualize methyl molecule. It is a first member of alkane family with molecular formula CH4. One carbon atom, and this one carbon atom it is bonded to 4 hydrogen atoms. We know what is atomic number of hydrogen, and even you have made a structure also, electronic structure. याद आया आपको? Similarly, it is similar to that H2 molecule, Cl4 molecule, HCl molecule, or you can make HF molecule also. Boys, be in this picture. चलो next point देखेंगे. So H positive, how it is formed, how H is converted into other molecule. It may be hydrogen molecule or any other molecule. जिस किसी के साथ combine हो. वो molecule. Then next point देखते हैं. आपकी क्लास में यूट्यूब स्टार्ट करते हैं ना. In order to show you नहीं बात सर pen drive, but मेरा pen drive में इतना डाटा ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड का है ना कि वो सब मुझे बैठ के डिलीट मारना पड़ेगा. and I really don't have time to do that. चलो next point देखते हैं. Now this thing we have completed till the reactivity series. The next point it is given main points of the activity series. Now here it is complete summarization of activity series. One by one note down this point, and same time we will discuss this point again. First one, electronegative character. तो बुक में लिखते हैं ना, मेरे पास वॉल्यूम आपके पास में है, मैं डिक्टेट करती हूँ. But note it down in your book. First one, the electropositive character decreases moving down the series. Moving down the series. Now, which series? Just now you have wrote those series, horizontal wala. So if you go from left to right, okay, यहाँ पे top to bottom दिया है. If you are moving from left to right, electropositive character decreases. 1 point. Electropositive decrease हो रहा है. मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि electronegative character बढ़ रहा है. But AU it is not reactive. वो corrosion भी नहीं कर रहा है. बराबर है ना? It is not undergoing corrosion. But at some point there will be slight change in PT. Slight change in AG. AG में only the upper surface there is a change. Under से it will not get corrode. It will take many years. Right now, next, the reducing power of metals. Reducing power of metals decreases
on going down the series. आपने अगर वर्टिकल कॉलम में लिखा है तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ. Otherwise, make one arrow to show that particular series. And please, from my point, I will instruct you all. Please note down that series, make one chart, and every day have a look of that particular series. Now, this will help you to write down many different reactions, because in your syllabus, ICSE में बहुत सारे reactions है, CBSE में इतने reactions नहीं है. The reducing power of the metals decreases. Here we have defined oxidation. We said metals are reducing agent. बराबर है ना? But if you go down the series from left to right, okay, we have written series from left to right. आपने vertical लिखा है, तो क्या बोल रहे हैं वो? reducing power, it goes on decreasing. Okay, इसका जो reducing action है, they are acting as a reducing agent. This property, it goes on decreasing. Same time, what will happen on the oxidation reaction? Fast होगा कि slow हो जाएगा? थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके ड्यूरिंग टाइप क्वेश्चन में. Oxidation will from left to right, नहीं, oxidation वो speed मुझे ये will. नहीं, मुझे लेफ्ट राइट का रेफरेंस मत देना. My point is very simple. Here it is given reducing property. हमने वो उसमें दिया है from top to bottom it goes on decreasing. बराबर है ना? तो what will be the effect on the oxidation reaction? वही सीक्वेंस में आंसर आपको दे. This will have the most. If it is decreasing, if this particular thing it is decreasing, Oxidation reaction will also decrease, right? It will lose electrons with more energy है ना? to be supplied. right ना? रिलेशन ही हम लोग देख रहे. If you are saying this reducing property, if the reducing action, if it is decreasing, बराबर, तो उसका जो ऑक्सीडेशन वाला पावर है, it will also reduce. If it is increasing, then this will also increase. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, वो दलाल के जैसे काम कर रहा है, इन दोनों का काम अलग अलग है. ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. बराबर है ना? तो if this is decreasing, this is also decrease. If this is increasing, this will also increase. यहाँ पे हाँ ना, फिर ना, तो ना, यस ना, if and only if वाला कोई केस नहीं है. This is decreasing, this will also decrease. Understood ना? जैसे हमने पीरियोडिक में टेबल में बोला, लेफ्ट टॉप टू बॉटम, atomic number increases with increase in the size. This property decreases in this reactivity series. समझा? Clear? Your name? Arnav. Ma'am, can you explain this point again? Here you have written a reducing property. Reducing property लिखा है ना? Reducing property decreases. In we are discussing the metallic point. Reducing property decreases. Okay, ये बहुत strong अगर reducing agent है और इसका ये जो strongness है, उसकी strength है, वो कम हो रही है, तो उसका oxidation easily होने वाला है? नहीं होने वाला. अगर इसका ये प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है, दिस मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्गली इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन. जैसा चांस मिला इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसको चाहिए ले लो इलेक्ट्रॉन. अगर यही काम नहीं कर रहा है, मतलब अगर वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं. समझ में? सो दिस थिंग्स आर रिलेटेड. सेम लाइक दिस, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज. ये क्या है? It is oxide. नहीं समझ में आ रहा है? Sit properly. Sit properly. I am here to answer your question. If not, you are not understanding. Please let me know. If you are getting bored, I will inform ma'am. You can go out. Don't waste my time and your time. Oxidizing agent. Okay, this is oxidizing agent. मतलब ये करने वाला क्या है? दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. लेकिन अगर उसको अगर लेना ही नहीं है, वो अगर वीक है, तो दूसरा दे भी रहा है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना. दूसरा अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इवन देन दिस विल नॉट अंडरगो रिडक्शन.
Understood the relation? So if this is strong, this means what? It is giving electron. Take away my electron. Okay? If this is strong enough to take the electron, it will take. अगर नहीं लेना है, weak है तो वो नहीं लेने वाला. इसका मतलब क्या इनके लास्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए. Hardly they need 1 or 2 electrons. Same वैसा. In order to complete the stability. इनका कैसा है? In order to complete the stability, they will give the electron and become electropositive. बराबर है? And remember one more thing. Okay? Electrons are not released. 4 electrons are not released at a time. 3 electrons are not released at a time. One by one. One by one. Because removal of electron, it requires more energy. तो एक एक स्टेप में डायरेक्टली अभी यहाँ पे एक था तो मैंने लिख दी. अगर mg का मैं लिखती थी, al का लिखती थी, 13 है. 1, 1, 1. But in our book, it is given +3 directly. If you go through your book, na, it is given +3. But this is not happening in one step. It will take n number of steps because some energy is associated. ये याद रखना. You can have this question for your any of the entrance exam. चलो, second point we have done ना. You understood this relation? Sure, last bench. हाँ तो बोल उसे. Reducing power of metal decreasing on moving down the series. Hence potassium is strongest. Reducing. Underline करके रखो. Potassium strongest reducing agent. Then next one. The tendency of metal लिखना है ना बेटा. The tendency of metals to lose valence electron. Underline this valence electron. That is tendency of metal to get oxidized decreases on moving down the series. Down the series, thus potassium gets most readily oxidized. Sure. Who will help me with this one? Read it properly. अच्छे से answer. The tendency of metals to lose valence. You read for yourself and explain it for us. You all read it properly, huh? जो कुछ वो बता रहा है, we have to finally summarize whether it is right or we have to add something in that. Wrong तो वो नहीं बोलेगा, इतना guarantee है, because Arna roll number 1 I have in my class. चलो बोलो. So the tendency to lose अरे valence. एक बेटा एक नाम के इतने सारे बच्चे आदमी सिंह आदमी कुमार पता नहीं क्या क्या मेरे को आज मालूम है. You will not believe I have made list of 356 students. Regular students and integrated students. बहुत इसमें मेरा सर from 11:30 I was working till 3 o'clock. इसलिए मैं आज यहाँ पे लेट हो गई आने के लिए. नहीं तो मैं शायद 3:30 बजे यहाँ पे आती होती. हाँ चलो बोलो. पढ़ लिया ना अच्छे से sentence? You all read this sentence properly, understood the meaning. Now whatever he is saying, if anything is missing, we will conclude it at the end. हाँ चलो. Oxidation. अभी आप मुझे help करना. हाँ. Oxidation is a tendency of an atom to lose electrons. Okay. Metals generally lose electrons. They have the tendency to lose electrons. They lose electrons more easily. Valence electrons are the electrons in the outermost shell of an atom. So only those electrons are lost. The metals lose those valence electrons and thus get oxidized easily. So that tendency to lose electrons decreases from here left to right. So
potassium loses its electrons most easily, whereas gold doesn't lose its electrons very easily. It takes a lot of energy to lose electrons. So we say that potassium is the most easily oxidized, while gold or platinum is the most difficult to oxidize. गोल्ड का तो होता ही होगा, तो भूल भी जाना दैट इज उसके पहले इसके आगे आई थिंक सिल्वर इज देयर ओके सिल्वर को अंदर से करोड़ नहीं हो रहा है राइट ना तो खाली ऊपर से इट इज फॉर्मिंग लेयर चलो एनीवन वांट्स टू ऐड एनी पॉइंट इन दिस एक्सप्लेनेशन काउंटर चेक करने के लिए वांट टू काउंटर चेक दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन व्हाई Gold react. Aquaric Gold react. reacts with Nascent chlorine is extremely reactive and gold is extremely inert. So then even xenon reacts with fluorine to form xenon chloride my dear and My oxygen. dear, listen. At present, whatever things are there in front of us, that only you will see. If you are going for your entrance exam, अगर ये वाला part if it is very significant, हम इस point पे ही पहले discuss कर लेते हैं. Gold किसके साथ react होता है नहीं react होता है. Now, as per our series, gold is not reacting with any of the thing. बराबर है ना यही हमारे सामने है ना पिक्चर फिलहाल हम वही पिक्चर देखते हैं then we will go for the next one. So at point yes. So पहले point करके electrolyte decreases of monomer species. So the Listen. the electropositive character decreases while moving down the series. So because of that, the tendency of the atom to lose its electron decreases. Decreases, right? Almost it is same. उसने खाली उसके हिसाब से answer किया. Okay, now in all this point, whichever we have noted, one thing is there that for electropositive character, it goes on decreasing from top to bottom. Okay, when the electropositive character is acquired, when the electrons are removed. बराबर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तभी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा ना अगर नहीं हो रहे तो वो नहीं बनेगा if it is giving electron it will become electropositive on the other hand if it is accepting the electron it will become electronegative. This thing is there. So in that particular series potassium it is at the top or the left hand side extreme having the higher value of reactivity Hg. Then the concept of valence electrons is given. बराबर है ना क्या बताया वो अंडरलाइन किसको किया है valence orbital electrons electrons. So this valence electron you all know where these valence electrons are present. They are present in the valence shell. And where is the valence shell? Outermost shell. So outermost shell normally which is away from nucleus. अगर आप ऐसे जा रहे हो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो it is close because size it is decreasing but at the top what is given that potassium it is electropositive it will lose the electron from the valence shell and next to potassium is a sodium ये ना check करो in that series is a sodium अभी potassium sometime it will become easy difficult to remember because sodium irregular वाला है. We have many examples of sodium in our syllabus also. Normal वाला if you go with NaCl तो अगर याद रखना है तो याद रखना before sodium there is potassium. Okay. Now this sodium and potassium both are present in our body cells also. This both are present in soaps also. Yes. So do you know Which soap is used? Potassium soaps are used. Potassium salts of stearic acid are used in for potassium body sodium. soaps. Potassium because it's soft. The soaps are softer in skin. So magnesium. No. Potassium or sodium is used for cleaning clothes and all. Potassium salts are used for cleaning skin. नहाने वाला साबुन जैसा. Potassium. और धोने वाला. Sodium. What is the difference between soap and detergent? Detergent is formed by sulfonating higher alkenes. And soap. And it's a sodium salt. And soap is formed by adding alkalis to stearic acid, which is a fat. Correctly. Detergent is very hard. Huh?
वो कौन सा सॉल्ट है? इट इज अ सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट। आपने आपके 9th स्टैंडर्ड की क्लास में देखा रहेगा स्ट्रक्चर देखा रहेगा ना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, difference between soaps and detergent. Okay, so for your exam you may have such questions also. Until now I have not seen ICSE papers, CPSE के तो papers मैंने देख लिए, so better they are asking questions such questions. No, so your complete paper will be based on 10th standard syllabus only. Grandma is now wanting us to study for 9th standard. Teacher. She said that some chapters like atomic structure, Because right? Atomic structure is a Many basic topics concept. are What is similar, history? ना? Even if they ask question, अगर periodic table में से कुछ पूछ लिया, because this series we are studying then, there are high chances of asking. That is fine, but the history of the History इतना कोई नहीं. मैम MCQ में 1 mark It will just be Rutherford अरे for नहीं, gold नहीं, foil. that Rutherford. 1 marks also matters ना. हाँ मैम इसे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, तो दिस इज अ करेक्ट टाइम, जस्ट गो थ्रू, एक बार रीडिंग कर लेने का, ज्यादा नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा रीडिंग कर लेने का ना. देखो नाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड द टॉपिक, आई एम आस्किंग यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वहां से भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज है, दिस इज अ लिंक, एंड इवन आई नीड you to connect with the 9th standard syllabus also. Directly मैं आपको metallurgy नहीं पढ़ा सकती, metallurgy में कुछ नहीं, hardly you will find procedure एक दो थोड़े term याद करने हैं, otherwise with the name also you can describe that complete process, एक figure मिल गया ना आपको, you can describe it properly, but after that metallurgy reactions also you have to write. So there you will face problem. अगर मैं ये अगर ऐसे ही छोड़ के आपको आगे लेके जाऊँ ना, तो रिएक्शन लिखते समय, और मैंने पहले ही बता दिया था, रिएक्शन इट इज अ डिफिकल्ट because students are not remembering the formulas, and this is not only in the few cases, maximum cases of such type only. वो एक ही बात करेंगे, हमको ऑर्गेनिक पसंद नहीं है क्योंकि हमको फॉर्मूला ही नहीं आता, हम भूल गए फॉर्मूला, हम पेंड हो गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, but that is not at all difficult. Your concept somewhere it is left. इसलिए इतना वो सब बताना पड़ रहा है, ऐसा है ना वैसा है ना, तो एक बार ये समझ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या हो गया, थक गए. I think twice in a week you have to sit for 2 hours chemistry subject. Okay, अब ये 2 दिन कौन से ये मुझे भी पता नहीं है. Only once maybe. नहीं, मेरा टाइम टेबल तो completely packed, और मुझे पहले ही बता दिया you have to complete with the syllabus, so it may be twice in a week. Let us see. And others for other schools they are having exam, तो वहाँ पे hardly 1 or 2 periods आए हैं दूसरे सेंटेंस में. Okay, चलो next week. ये हो गया ना हमारा पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ मेटल. नेक्स्ट आइटम, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, हमको लिख के रेगुलेशन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन में डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, अंडरलाइन दिस टर्म, सब बताती हूँ बाद में, पहले सेंटेंस पूरा करो. From water and from dilute acids, but the metals below hydrogen cannot. Next line, reaction is there, 2Na plus 2H2O giving, better you are not writing. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, whichever point I am giving, note it down. मुझे वहां से स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, ask student to write in notebook. Meanwhile, you take around, correct those notebooks, put your sign with date. And next class, bring your same notebook. Huh? 2Na plus 2H2O giving 2NaOH plus H2 gas. Show upward arrow for H2 gas. Second reaction is with
zinc and HCl. This reaction is with dilute HCl, giving ZnCl2 plus H2 gas again. Then next reaction, which is not happening, note it down, Cu plus H2O, no reaction, and Cu plus HCl, again dilute HCl, no reaction. Okay, now you have to cross check the two things. First one, which elements are present above hydrogen, which elements are present below hydrogen. एक चीज चेक हो गया, reaction with water and reaction with HCl. हमने total we have taken 4 reaction, 2 with water, 2 with HCl. Check करो फटाफट. Again in class, I think 9, you have studied acid, bases and metals. 10th. Seriously, maybe 10th. Acid, bases and metals, right? In acid, reactions were there. Acid with this one, metals. Acid with non-metals. Okay? याद आया? Product with acid with this one, metals. Hydrogen gas and salt. Metal salt. And connecting to this particular reaction, one small activity was there. Hydrogen gas वाला एक छोटा सा activity भी था, pop sound वाला. याद आया? Pop sound वाला एक activity था. Then acid with carbonate reaction. Carbon dioxide gases And water. water. And carbon. And metal. मेटल ऑक्साइड बना लिया पापा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, सॉइल बना लिया, एंड वाटर भी बना लिया. और क्या के कितने सॉल्ट मेटेलिक ऑक्साइड, metallic oxide. You have this topic this year. It is completed. Or still to do? It is completed. Exam is also. Okay. So for simple, एक ही question पूछा मैंने. Acid with carbonate. Metal carbonate. हाँ, metal carbonate. How many products? 3 products. We get the metal salt and water. Metal salt and carbon dioxide. Yeah, the products. So how many products? Which are those? Carbon dioxide and Water. what? Technique is almost too padi. See where you are lagging. Understood? Reaction तो हम बोल रहे, they are simple. Again, one more part, you need to balance these reactions with proper examples. समझ में आ गया? It is not so simple. If you are giving, if question is like this, identify the following reaction. Or they may give you reactor and complete the following reaction. They give the reactant. हाँ वही बोला ना, reactant दे देंगे and they can ask you to complete the reaction. They can ask you with this reaction is with which compound, or they will give you something missing terms. For example, acid दे देंगे, one of the product they can give, ask you to write down the remaining part of the reaction. कैसे भी हो सकता है questions. Understood ना? इसलिए we need connectivity. समझ में आया? Now hereafter whenever you will start reading now, connect those previous points also. Abhi which point we were discussing? 4 reactions are there, 2 with water, 2 with HCl. Okay, acid with metal. It is like that now. Acid with metal. This reaction already you have done under acid and basis topic.
Okay, we know acid react with metal to form salt and hydrogen gas. Same thing is given. Now, according to this series, where this metal is present, below or above hydrogen, left or right of hydrogen, दो चीजें है ना बेटा? एक काम करना, आपको vertical वाला भी बना के रखो in order to avoid confusion. Because in explanation part it is given in the vertical order and we have taken in the horizontal order. तो confusion नहीं होना चाहिए. So where this copper is present in that series? Below hydrogen. Below hydrogen. Just below hydrogen. पहले वाला example में zinc है शायद. And yeah, first example is Na. Okay. Na is next. After potassium, next is Na. So it is above hydrogen. It replaces hydrogen. It replaces hydrogen. Form क्या होता है? Hydroxide. Metal hydroxide is formed. NaOH is formed. Whereas in second one, Zn plus HCl. क्या form हुआ है? Zn plus HCl. ZnCl2 and H2. Yes. Whereas in second part where no reaction is happening, copper it is present below hydrogen. देखो, it is on right hand side of hydrogen. बराबर एकदम right में ही है. Next to hydrogen is copper. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? शुभम. अच्छा क्या हो गया? बोल हो गया. समझ नहीं ना reactivity series. Okay, so hydrogen and next one is copper. Copper as per the sequence, it is below hydrogen, so it will replace hydrogen. No. That's why no reaction is happening. Understood? Whichever element is present below or left to hydrogen, they will replace hydrogen. Which are present to the right side or below hydrogen, they will not display or replace hydrogen. In short, you can say no reaction is happening. Okay, and meanwhile, revise that previous part also, acid basis reaction wala part. Chalo, next point देखते हैं अभी. Any metal higher up in the series, any metal higher up in the series displaces any element below it. Any metal higher up in the series displaces any element below it from the salt solution of the letter LATTER. Okay, first you write down the reaction CuSO4 plus Zn giving ZnSO4 plus C. ये sentence पहले complete करते हैं, then we will discuss. Then write down, after reaction write down, the larger the difference in the position, of the metals in the series, larger the difference in the positions of the metals in the series, more rapidly does the displacement occur. More rapidly does the displacement occur. Okay, now the first thing, examine the reaction carefully. Whatever reaction you have written, look at that reaction carefully. वहाँ पे देखो, देख लिया?
That's the main thing here. I'm not asking explanation right now. I have asked you all to examine the reaction. I am having my own list of questions. अगर मुझे explanation चाहिए, I will throw question on you. हो गया? Every one of you written the reaction. Reaction is in between. In between zinc sulfate. What is the type of this reaction? Displacement reaction. This is again there in your 10th standard syllabus. 1. ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन कर लिया है हाँ प्रैक्टिकल में आपको भी शायद डिस्प्लेसमेंट का आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन अंडर दैट रिएजेंट्स एंड रिएक्शन एवरीथिंग इज गिवन नाउ गो बैक टू योर सीट्स look at that sequence. It is I think copper and then zinc. Copper left to right here. First is copper. Zinc and then copper. Zinc and then copper. Okay. So in the reactivity order, zinc is more reactive. Zinc is more reactive than copper. So what happens in this reaction? Zinc will displace copper from copper sulfate. Because it is more reactive. बेटा उठ जा सीधा बैठो क्या हो गया यू आर गेटिंग बोर्ड कुछ नहीं होगा we can concentrate focus only on one thing at a time okay either you connect with this thing or connect with that thing whatever it may be इसमें मैंने आने के साथ में आप सबका प्लेस चेंज कर दिया और आपको पहले ही बोला कि नेक्स्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी प्रॉपर दोस हु आर सिटिंग बैक ना ऑलवेज कम इन फ्रंट इधर हो जाओ टू दिस साइड ओके so it is zinc and then copper in the series this means zinc is more reactive than copper जो हम displacement की reaction whatever we are doing in practical from where does it come from this reactivity series okay so this series is such a way that one which is displacing the other it is more reactive और एक चीज उसमें दी गई है it is depending on the distance The difference in the वो भी point it is given ना if the distance is more क्या है वो point the more rapid it is displacement okay. Larger the difference in the position of metal in the series, more rapidly does the displacement occur. अगर distance ज्यादा है, तो क्या होने वाला है? Displacement will be rapid, rather than near about. Okay, near about में क्या होने वाला है? There will be slight difference. Right now there will be slight difference. For example, अभी मुझे यहाँ पे आना था, but as per my knowledge. This particular UT it is located somewhere near to the Reliance Foundation. क्योंकि last time मैं Reliance Foundation में गई थी for correction duty. तो मेरा point वो वैसे ही था, but suddenly we open Google Map search किया तो पता चला वहाँ नहीं जाके DMart से right मार के अंदर आना है. So there is a difference. वो ऑटो से वो सब हम घूमते फिरते आते. तो अगर ज्यादा distance है तो रैपिड रिएक्शन होने वाला है या स्लो रिएक्शन होने वाला है रैपिड and if distance when they are close near then reaction will be slow and which reaction they are undergoing displacement reaction double term ने use किया है till now it is displacement reaction okay this example is from displacement reaction now one more thing you have to cross check taking example of double displacement. Double displacement का you know the example कौन सा है? कौन सा वाला? HCl plus hydration reaction. Precipitation is an example of double displacement reaction. Example, any other example? आप लोग भी कुछ बोल रहे हो ना मुझे प्लीज एग्जांपल सपोर्ट करके बोलना
NaOH with NaCl. giving us NaCl. Okay, this is under, you are saying neutralization reaction. So why it is under this one? Because the salt Usually acid it's and in bases combine. Are you sure? Agar if she is saying neutralization reaction, then NaCl it is not giving PPT. No. It is soluble salt. It is soluble salt. But if you are saying precipitation reaction, then precipitation is a double displacement. Example चाहिए उसके लिए. समझ में आया ना? आपको difference. If you are saying neutralization of NaCl, it is example of neutralization where double exchange take place. But NaCl it is a soluble salt. हमको कुछ नहीं समझने वाला क्या हो गया उसके अंदर. But if you are giving example of precipitation, then precipitation are visible. Precipitates are visible in the test tube. तो वैसा वाला example दो. NaOH plus CuSO4. NaOH with CuSO4. CuSO4. Are you sure this reaction is happening? It is given in your book. Yes, analytical chemistry. अच्छा अगर आपको पता है तो ठीक है. But we have done example of BaCl2. Barium chloride. Barium chloride and Na2SO. Yeah, barium sulfate is a precipitant. barium sulfate is a precipitant. FeSO4 Na2SO4. Na2SO4. तो हमने वो precipitation वाला एक reaction किया था लैब में. अगर ये वाला अगर आपके बुक में है then you can go with this one. It is in this textbook. बताओ जरा मुझे. Silver nitrate Many plus precipitation. sodium chloride, silver chloride and silver chloride and sodium nitrate. चलो सॉल्व कर. अभी तो हमने क्या copper sulfate NaO. Okay. And silver nitrate वाला example है with ammonium chloride. HCl. HCl halogen वाला compound है. HCl. हाँ chlorine base वाला compound है ना. तो मैंने कौन सा example दिया है? Even I gave the chlorine base example है NH4Cl. NH4Cl. Precipitation are is formed. Right now. And this precipitation they are milky white in color. They are visible. ये copper sulfate का color जो आपने बताया है color is given pale blue precipitation is strong right now and she said NaOH with HCl neutralization वाला is under this category. आप double displacement it is there example वहाँ पे है तो मुझे I mean, yeah, 9th standard textbook we had that. मुझे वाला याद है. नहीं मैं क्यों पूछ रही हूँ एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने पूछा because normally NaCl it is a soluble salt where we cannot see transparent solution हमको मिले NaCl soluble और NaCl is a soluble salt wherever this all reactions are given with precipitation Sodium chloride. so we can easily identify समझ में आना कितना क्लास से Not displacement direction, single or double. These two things are there. Example दिया है NaCl, sorry, NaOH with HCl. Exchange take place there, okay? But whatever NaCl it is formed, NaCl it is water soluble. तो जो last में product मिलेगा आपको, it will be transparent solution. But whichever things we have discussed now, it is under precipitation, where in test tube we can see the precipitation. Color वाला substance हमको मिलेगा, from that we can easily identify that reaction is complete. समझ में आएगा difference? So if whatever may be the reaction, go with your textbook. अगर textbook में correct है, तो I don't have any issue. Otherwise paper में जाके कुछ गड़बड़ी मत करते. समझ में आया ना? We have to handle this part reaction वाला part very carefully. चलो next point देखते हैं. Textbook में का ये reactions है ना? Next one. Oxides of metals. Oxides of metals. K, Na, Ca,
comma, Mg and Al cannot be reduced oxides of metals K and A कॉमन लगाना है इसमें Na Ca Mg and Al cannot be reduced by common reducing agents like H2, CO or C. H2, CO or C. Chalo. Throw light on this point. Oxides of metals. Which metals? Oxides are what? Oxide मतलब क्या है? Compound formed with metal. Compound forms with oxygen with metals. Right? क्या किया है? Point. Cannot be reduced by common reducing agent. reducing agent मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरे point is here which itself undergo oxidation and act as a reducing agent. So oxides of metals, these metals are at higher order in the reactivity series or lower order. Higher, lower order takes standard hydrogen, अपो and B. Okay? इतना दिमाग में रखना. तीन एलिमेंट है एल्यूमिनियम का मोलर हाँ. फिर उसके बाद भी जिंक आयरन और लेड कैलमेट और तुम्हारा Because these are very high in the reactivity series. These are not so high. The zinc, iron, tin, lead are not as high as the others in the series. हो गया आपका पॉइंट क्लियर. Any doubt? No. Okay. अब मुझे तेरा क्वेश्चन बता दो. तूने क्या क्वेश्चन पूछा था? after you said that No, I didn't say it is given in the. वो ही वाला point मैंने before hydrogen all the metals before hydrogen all the metals that are there cannot be reduced by common reducing agent. Oh. And is there from examples. potassium to aluminum. Al is not there in that series. Air is there, but after air, zinc, iron, and lead are also there. So are they reduced by common reducing agent? This point it is applicable to that complete series. Few elements are not given, but they are there in that series. ये वाला जो point है ना ये वो सबके ऊपर apply करते हैं. समझ में आया? बराबर है ना? I know, right now. So his question is like this. I have given only few elements from that series, but in that series still more elements are there. But this particular point is applicable to that complete series. No? So whichever elements are there, we have to consider all those elements. Below, above, hydrogen is a state. ओके याद रखना ये पॉइंट के लिए अगर इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में if that element given it is not mentioned but we have series status. जैसे यहाँ पे जिंक मेंशन नहीं किया है अगर हम जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करें तो वो होला रेड्यूस तो उसकी कंडीशन है. देखो मैं आपको एक नॉर्मल वाला चीज बताती हूँ. आई थिंक इन योर सिलेबस केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड है. नहीं Organic है ना? ऑर्गेनिक है. हाँ अभी सुनो जरा. This is out of your this particular thing. In chemistry of that carbon compound again it include I think alcohol topic. Yeah. Alcohol. ये सुन लो बच्चे.
Okay, but stop your all other activities. Alcohol topic is same. For every topic, it is further classified. जैसे periodic table में elements को हम classification करते हैं. Same like that, alcohols are further classified as primary, secondary and tertiary. अब ये कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा ये हम अभी नहीं देखेंगे. For time being, just you remember primary types of alcohol, primary, secondary and tertiary. Okay. अब प्राइमरी मतलब नीचे, सेकेंडरी ऊपर, टर्शियरी ऊपर, सबसे टॉप में. जैसे अब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड पकड़ रहे हैं टॉप में. तो नाउ यू टेल मी which alcohol will undergo reaction faster? Tertiary है alcohol. Tertiary. जैसे उसने बोला यहाँ पे जिंक है वो रिएक्शन अंडर ओके होता है. तो मैंने आपको क्या बोला, कंडीशन अप्लाई करके. तो अगर हम लोग अल्कोहल को टॉप में कंसीडर कर रहे हैं विच विल अंडरगो रिएक्शन फास्टर, this does not mean that primary will not undergo reaction. It will undergo reaction, but certain conditions are required. Conditions in the sense high temperature, pressure, catalyst. Understood? So this will be the condition. If that zinc is undergoing reaction, beta, आपके लिए बोलिए. If it is undergoing the reaction, then that will be under some condition. Under normal it will not. अगर कंडीशन प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट अगर इसमें हम चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल गो. जिसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. टर्शियरी का फटाफट रिएक्शन होता है. लेकिन अगर हमको प्राइमरी जो है ना वो क्लास का सबसे लेजी वाला बच्चा रहता है जिसको हमेशा पुश करना पड़ता है. पढ़ाई करो, होमवर्क करो, बुक कंप्लीट करो, रेगुलर आओ, ऐसा करो वैसा करो. लेकिन जो टर्शियरी रहेगा ना टॉपर स्टूडेंट रहेगा, वो पूरा काम अपना खुद ही कर लेगा. उसको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत नहीं है. हाँ यस, आपको कुछ पूछना. एग्जांपल्स क्या टर्शियरी का? टर्शियरी का एग्जांपल, यू वांट दैट एग्जांपल, टी ब्यूटी अल्कोहल और इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. Alcohol we are considered slightly neutral, so primary ही पढ़ रहे हैं. They are neutral only. This is the reason why people are drinking alcohol. समझ में आया? Acidic नहीं है basically, neutral है इसलिए. हाँ, वो न्यूट्रल है. सही है. हमारे कंपाउंड्स के अलग अलग नेचर रहते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. ओके, दिस नेचर it can be detected depending on the pH scale. pH scale you might have studied in your lower classes. Alcohol, they are neutral in nature. तो ड्रिंकिंग वाले पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज करते हैं, दिस इज अ रीजन दे आर न्यूट्रल इन नेचर. और आपने कभी ऐसे भी सुना रहेगा न्यूज में पहला पॉइंट ये सुनते हैं हम लोग न्यूज में कि शराब की भट्टी को आग लगी. Most of the time this is there in the news. Then another point जो न्यूज में हमेशा होता रहता है, जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है. हाँ, अब मैं बोल रही हूँ इट इज न्यूट्रल. जहरीली शराब मतलब अल्कोहल को कंटामिनेट करते हैं वो लोग ताकि उसका इंडस्ट्रियल में काम करे, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. Copper sulfate. Copper sulfate is added. और pyridine is also added. But smell pyridine but looks almost like Okay, so when we have class, okay, next video. directly next. But I will पूरा नहीं करना ना, वो only to change. थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए because for more time we cannot concentrate. और हमको भी मुंह खोलना चाहिए. यार रेड टी शर्ट पूरा नहीं लगाना, करना. क्या होता है मालूम है, अगर बीच में से since from morning we are doing the same thing,
सो इन बिटवीन अगर कुछ रॉन्ग चला जाता है ना तो दिमाग में एकदम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है अगेन आई हैव टू वर्क ऑन द सेम पार्ट टुमारो कितने सारे स्टूडेंट्स का बनाना है लेक्चर कंडक्ट करने हैं ओके अंडरस्टूड ना सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू विल डू read the next part and come देखो हम सब यहाँ पे कुछ तो गोल लेकर आए हैं we have to achieve our goal right ना चलो अगेन you have class Aditya, maths देखना मेरी वाली में क्यों दे नहीं है यार मेरे पास अब देखना एक बार मेरी भाई बैग में लगा करना मेरे पास सामान निकला इसमें मैथ्स और डाल फटाफट और इनिशियल वॉल्यूम किधर है बैग में दे बैग में दे अब मैं क्या करूं मेरे पास तो वॉल्यूम ही नहीं है मेरे पास वॉल्यूम नहीं है बच्चा भी मेरा फोटो बनाया ये चेक करो नहीं कैसे क्या बोले नहीं द्वारका होता है आए हाँ भाई तुझे बहुत गुड न्यूज़ देनी है मुझे समय था ऐसे तो मैं स्कूल में भी जाती थी बहुत बहुत सकता है भाई तुम वो निकल मैं डेली ऐसे करती हूँ कितना क्यों आ रहा है आदत को रो दे यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे प्लीज भाई कौन बैठता है क्या बात है करना भाई लेक्चर ऑडियो का टीचर था